and I believe the news is now broken. It's now confirmed. You are the next finance. You no longer, or as of tomorrow, you will no longer be finance minister designate. Is that right? I had a. Have you received this information too formally? Nobody's told me about this, but I believe that I will tomorrow be either a finance advisor or minister, but मुझे पता नहीं. मेरे ख्याल से minister होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है seriously. But कुछ ना कुछ कल हो जाएगा और कल रात को फिर मैं चले भी जाऊंगा IMF से. Lekin you're not an elected official. You don't hold elected office yet, do you, Miftah? No, I don't. But you can be a minister for 6 months. But it's up to the government's discretion. It's the same thing. The advisor जो है वो कोई committee chair नहीं कर सकता, minister कर सकता है. But you can only be a minister for 6 months, and then after that, if you're not elected, then you have to revert back to being an advisor. So then they'll have 6 months in which to nominate you as to make you a senator or get you an elected seat somehow. I mean, that would be the. Okay, should we get started? We've got a pretty decent group of people here, Miftah, key influencers in the economics profession. I want to welcome all those people watching live on our social media stream as well. Right now, I always thought it would be a good idea to put the finance minister of Pakistan before a group of economists. We always see finance ministers talking to industry, to business people, and they always have usually the same thing. You know, they talk about how the government should help them in their specific industry or business more. But I always thought it would be an interesting thing to do, to put a finance minister before a group of economists. You don't see that happening very often in public settings, number one. Number two, I wanted to choose a group of economists whose ideas are not as widely in circulation in the media as they deserve to be, or as they should be. So this is our opportunity. So welcome from Profit Magazine to all of you, and thank you all for participating. Thank you, Miftah. Thank you to everybody who's this live. Let's get started right away. Miftah, I've got a couple of quick questions for you, and then we're going to start opening it up to our panel of participants. My first question, how long are you here for? And I don't mean in this specific event. Yeah, I seriously, I don't know. That's not my faisla. That's not my decision at all. That's for my political bosses to decide. I'm assuming that I'll be here for the whole year next year, and I make this assumption not thinking that we will stay here for the whole next year, but because I have no other choice. So I'll do a budget, and then I'll plan as if I'm going to meet those budget targets. So ईमानदारी से budget करेंगे. और अगर if you don't have a horizon, if you don't have a timeline looking forward, what sort of a policy mindset are you bringing to the position? Are you thinking? My horizon is August next year. My horizon is that if we will be here till the August of next year, we should plan as if I think I should work as if I will be here for the till August of next year. And, now, moving along, you have said that the preceding government left behind a worse fiscal situation than what they professed. We've just seen your predecessor, Shaukat Tareen, tweet just now that he left a fiscal deficit of, what did he say, 2.5 trillion rupees. And he says your target is 4.2 trillion, and he had 2.5 trillion in the first 9 months. I take it you don't agree with those numbers. I mean, look, I seriously, the first day I saw a piece of paper. So their initial target was 3990, and there I think they had said that they would do a 25 billion primary account surplus. That's what they had said, right? Depending on how much money you spend and all that, this could go. I mean, I saw numbers of 1,300 projections of 1,300 billion deficit, primary deficit. Okay, I mean, at this point, when I said 5,600 billion deficit, that's possible. I mean, and this is assuming 6,100 billion collection in the last 3 months,
This is assuming 6,100 billion collection for the whole year. But this is also assuming No, but Mr. but this is also let's assuming simplify this a little bit. this is also assuming that you do subsidies till the end of the year, this fuel subsidy, which obviously will try and curtail. And so based on certain realistic assumptions, they were looking at a target of, they were looking at a deficit of 5,600. That's what the paper, that was the paper given to me by the finance ministry, and that's the paper that was given to me. It was given to Shaukat Tareen also by the finance ministry. So, I mean, he knows that. So really. Okay, well, I mean, I had a few follow-ups, but I noticed Ali Khizr has a question here. Ali, did you want to jump in right now? Yeah, thank you. So, Miftah bhai, like, what is the 9-month number? I think Shaukat said some 9-month number. Let's stick to what is the 9-month number, and just go through what are the numbers that leading to this high number in the last 3 months. Usually the last 3 months are the highest, but what Shaukat has tweeted and what you're saying, there's a big difference. So can you let us go through the breakdown? मुझे पार्टी कुछ लोगों ने कहा कि रिस्पॉन्ड करो, but I was really busy. I'll maybe respond to Shaukat by tomorrow. I mean, clearly जो कागज मुझे दिया गया है, वही कागज शौकत को भी दिया गया था. इसमें कोई बहस नहीं है, ठीक है. और उसमें 5600 अरब रुपए का डेफिसिट है. Assuming के मतलब 373 अरब रुपए का, they were assuming a 373 billion rupee subsidy on the fuel price. Okay. They're also assuming a 220 billion rupee bailout for SNGPL, because that's how much money SNGPL has lost selling LNG as domestic gas and other stupidities. That's unfunded. That's below the line. Didn't they fund for the budget? नहीं, ये आपको जब सर्कुलर डेट भी होता है गैस का या बिजली का या किसी, तो वो तो नीचे आ जाता है ना. वो आप That's what Shaukat was saying as well. No. एक मिनट सब्र करें. देखिए ये आपकी लाइबिलिटी हो जाती है as long as you don't pay government. लाइबिलिटी हो जाती है. Let me finish अली भाई. लेकिन जब आपको ऐसा लग रहा है कि LNG अपने SNGPL डूब जाएगी, तो you have to pay, and then when you pay, that is registered as an expense. No, I'm sure वो तो करना है, but you both are right in your own perspective, I guess. No, we are not both right. I am right and Shaukat is absolutely wrong. Shaukat knows better than what he was saying. 41 अरब रुपए तो मर के भी नहीं हो सकता, वो झूठ बात है. वो नहीं हो सकता था, that I agree with you, but वो 2.3 का नंबर उन्होंने कर दिया और उसमें आप जो है सर्कुलेटेड का ला रहे हैं 56 के अंदर, तो वो that's what that part is right. नहीं, वो एकदम गलत बात है ना. 4.3 तो हो ही नहीं सकता, वो तो कैसी बात है. 4.3 नहीं हो सकता, that I agree with you, that there I agree. 5.6 ज्यादा है ना, it would be somewhere in. एक मिनट, 5.6 में आप 200 अरब रुपए कम कर ले अगर SNGPL को ना दें, लेकिन वो नुकसान हो चुका है और SNGPL बंद ना हो जाए, 25 अरब रुपए तो दे चुके हैं ऑलरेडी. हाँ, ठीक है. So 5.6 नहीं हुआ, 5.5 हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा, मतलब but what Shaukat is saying is absolutely not true. And where let me just the last one thing on this. When they were saying कि 25 अरब का surplus करेंगे प्राइमरी का, मतलब we are looking at a 900 billion primary deficit, or actually 1300 billion primary deficit. Sorry, इसको हम ये. So how is IMF taking it? The next question is, okay, given how is IMF taking it, and how you would be able to go for that, given that you haven't really considered on the subsidies on petroleum. And I told IMF that I'm going to be open with you and I'm going to share the ईमानदार का data with you. As long as I'm the finance minister, हम आपसे कोई झूठ नहीं बोलेंगे, जो है सो है, because they find out anyway in just 10 days. Of course, they'll know that. And I've had a good discussion with IMF twice. Reserve से भी मिला हूँ, finance secretary साहब भी मिले. I met with the mission chief today. अगर कल मैं ECL से निकल जाता हूँ तो कल रात को अमेरिका चले जाऊँगा. तो अब मेरे पास वीजा भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा. So then Akhtas has a question. Dr. Akhtas Hamzan from Reed University. जी, आप क्या, can you hear me okay? Yes, loud and clear. Go ahead, please. Okay, Miftah sir, my question about your upcoming negotiations at the IMF. मतलब इसके बारे में एक छोटा सा आपको पॉइंट देना चाह रहा था कि अभी जो अर्जेंटीना के साथ IMF की बड़ी
जबरदस्त negotiations हुई हैं, तो the IMF, the Argentinian government seem to have gotten a reasonably okay deal. मतलब वो 3 साल में staggered अंदाज में अपने बजट डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेंगे. तो मेरा ख्याल है कि मेरा एक सजेशन था, I don't know how you look at it, कि ये जो आपकी negotiation होने जा रही है, this is going to require a lot of skill on your part, because आपको उनसे डॉलर भी लेकर आने हैं और साथ साथ आपको थोड़ी सी फिस्कल स्पेस भी अपने हाथ में रखनी है कि बिल्कुल ही तमाम सब्सिडीज खत्म ना करके प्राइस पास ऑन कर दें, क्योंकि वो शायद पॉलिटिकली सस्टेनेबल ना हो सके आपकी गवर्नमेंट के लिए. तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन ऑफिस के किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी साथ अपनी नेगोशिएशन टीम में शामिल करें, बिकॉज दोज पीपल आर रियली वेरी सुप्रीमली ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन. एक तो ये बात करनी थी, और दूसरा बड़ा क्विकली एक आपसे बात पूछनी थी कि आई वाज जस्ट लुकिंग एट सम नंबर्स इन प्रिपरेशन फॉर दिस मीटिंग. तो मैंने देखा कि जो आपका ऑयल इंपोर्ट बिल है वो पिछले साल के मुकाबले में 92% ज्यादा है. टोटल इंपोर्ट्स की वैल्यू 50% ज्यादा है. तो ये तो इन फोरकास्ट अगर आप करें तो आप तो टोटल इंपोर्ट बिल आपका 80 बिलियन के ऊपर कहीं जा रहा है. 110 के ऊपर ब्रेंट अभी इस वक्त है, और लग रहा ये है कि रशिया इज गोइंग टू बी यूजिंग द प्राइस ऑफ ऑयल एज अ स्ट्रेटेजिक वेपन. तो इस सारे तनाजुल में आप कैसे इंपोर्ट बिल को कंप्रेस करेंगे? क्योंकि ठीक है आप प्राइसेस को ऊपर जाने देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, हमारा जो एनर्जी प्रॉब्लम है वो तो करंट अकाउंट डिफिसिट खड़ा होता चला जाएगा. तो इसमें मैंने पहले भी आपके साथ राशनिंग के ऊपर बात की, आप इतने बड़े फैन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई और सोल्यूशन सामने नहीं है. थैंक यू. Miftah, connected with that, can I just add another question onto this? How long do you intend to maintain these fuel caps, these fuel price caps? Let me answer Dr. Addar's question first, and then I'll come to yours. देखिए, पाकिस्तान का मसला जो है ना, वो it's not too much import. Pakistan doesn't import whole lot. ठीक है, 20-22% of GDP is not such a big deal. The issue we have is not enough exports. 8% 9% एक्सपोर्ट करते हैं, 10% कर लेंगे एक्सपोर्ट तो बड़े खुश हो जाते हैं कि 10% एक्सपोर्ट कर लिया. ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं इकोनॉमी, सबको पता है कि 1950 में या 1990 में आप वर्ल्ड एक्सपोर्ट का ज्यादा शेयर करते थे बनस्बत जो आज करते हैं. आई थिंक 92 या 93 के अंदर 1992 or 3 में we were exporting 0.18 of world exports. Now we are doing 0.12% of world exports. So that's not sustainable. You have a business, whatever reasons, your business, your businesses, your firms, your companies are not able to export, they're not able to compete. And they have a very good protected market in Pakistan, albeit a very poor market, small market, but they still prefer to sell to the protected market under high barriers. And I think that's a racket. I've said this, import substitution is a racket in Pakistan, and it's an elite rent-seeking, business. And so we need to, let's say, bring down the barriers to international trade, bring down the barriers of imports. Since all of you are economists, you also know that import tariff really are an export tax as well. So, you can't really have high import tariffs and then expect that your exports will be competitive. It can't be. But that's a long-term issue. But the thing is, in Pakistan, there is never a good time to start a long-term thing. So you have to start this now. Whether I'm here for 3 months or 1 year or 5 years or whatever, I have to do this, right? So अभी जो डॉक्टर साहब ने बात करी है कि फिल फॉर जो है वो आप इम्पोर्ट कंप्रेशन किस तरह करेंगे, बहुत कंप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, मैं पूरी मईशत को बिठा दें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कर दें, 16-17% कर दें, समथिंग लाइक दिस, यस, या अजीब सी ड्यूटियाँ लगा दें, अजीब सी वो कर दें, अगले 2 महीने में हम कंप्रेस कर सकते हैं. उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कमिट हो चुकी होती है, एलसीआर खुल चुकी होती हैं मशीनों की 6 महीने पहले, 8 महीने पहले. So in short term, 2 महीने 2.5 महीने के अंदर seriously, I don't really have a magic wand that I can compress the import so much, and nor do I really wish to compress the import so much. But I would like to moderate the imports in Pakistan at least in the next fiscal year. And I don't think the basic imports of energy, there is nothing wrong with it. If Pakistan doesn't have energy, what are we supposed to do? Are we supposed to starve our people of energy requirements? Pakistan hardly uses any energy. Hamari per capita consumption of electricity is about 50% or 60% of India's, on a kilowatt hour basis. So we really need to import more energy. We just need to export more stuff.
and we need to produce that energy into more productive uses, which we have failed to do. So that's my thing. But मैं ना कोशिश करूंगा बहुत ज़्यादा, ना कर सकता हूँ कि 2 महीनों में मैं कंप्रेस कर सकूँ रिपोर्ट को। इस फिस्कल ईयर में तो कुछ नहीं कर सकते। इस फिस्कल ईयर में जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है वो यही है कि आपका डेफिसिट जो है, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो 5.3 बिलियन से कम हो गए सिंस March 4th, or something like this. So now we are standing at $10.8 billion. We have 4 billion worth of amortization to pay over the next few months. We have we will get a few $100 billion worth of current account deficits over the next few months. So I need to ensure that Pakistan doesn't go into a very crisis-like situation. And the first thing to do, I think, is to get the stalled IMF program going. And if that happens, I think that's a good signal, not just to the markets, but more importantly, even to bilateral countries that wish to help us bilaterally for shoring up our reserves. Even they also want to see. Just to give you an idea, there's a bank called AAIB, Asia Infrastructure Bank, Asian Investment Infrastructure Bank, which is a Chinese bank which is basically competes with Asian Development Bank. And even that Chinese bank said to us that we will loan you if World Bank loans you, and World Bank loans you if IMF loans you. So getting IMF, as all of you know, is very, very important. And that's where you guys can also help me by telling people through your, sources. Ali Khizar writes for Business Recorder and, tweets all the time. I think Amar also tweets. So Ali Kiani Saab is here, Adil is here, Adil also tweets. Ali Hasnan also tweets. I think Ma Rahman also tweets. So जो भी आप लोग करते हैं, थोड़ा सा ये मेरी मदद कर दो यार, कि आप खुद बताओ मैं क्या कर सकता हूँ अगले 3 महीने में। डॉलर्स नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? So do I not need to make a deal with IMF? I think over here, the general consensus would be that you need to make a deal with the IMF. It's just what will it take to make that deal? Mohammed Suhail from Topline Securities just switched on his camera. Thank you, Khurram, and thank you, Miftah. I think few suggestions and few questions. Miftah bhai, आपने जिस तरह कहा कि सबसे बड़ा जो challenge है is your falling foreign exchange reserves. एक काफी अर्से पहले एक proposal आया था कि आप जो FE25 है that includes कोई $7 billion in Pakistan plus dollar cash in lockers और घरों पर है, उसकी भी कोई estimate है कि $3-4 billion है. तो जब हम 7% expatriate Pakistanis को रोशन डिजिटल अकाउंट में दे रहे हैं, so why not tap these $10-11 billion at the rate of 4-5%? मुझे लगता है कि अगर आपने ये कोई स्कीम निकाली तो ये आपके पास पैसा जो आज सॉप की सूरत में आता है, ये डायरेक्टली $2-3 billion भी आ जाए तो that will provide a much needed support to the falling reserves. This is my suggestion number 1 and I need your comment. Second is कि circular debt, as you know, is growing very fast. जब लास्ट आपकी गवर्नमेंट आई थी तो पहले ही साल में कोई 400-500 बिलियन का सर्कुलर डेट रिजॉल्व कर दिया गया था. So do you have any plan to do such thing? क्योंकि I think you can negotiate with IMF of a one-time fiscal deficit increasing, but this will resolve the energy chain issue. And third is, as we have seen, that interest rate plays a key role in making the sentiments of the investor community, business community. अभी हमने देखा ये है कि there is a communication gap or a contrary stance by the ministry and the central bank in the T-bill auction, और जिस aggressively ministry जो पैसे sweep करती है T-bill auction पे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि policy rate और T-bill rate में कोई 300 basis points से ज़्यादा फर्क हो गया था. And this is an art. DG debt है या debt office है, उसको borrowing करना तो ज़रूरी है because you cannot print money. But the way they have been doing, I think central bank is also not happy. So do you have any plan how to make this more efficient and coordinated? Thank you very much. Thank you, Sohail bhai. पहली जो आपकी suggestion थी, एक सेकंड पहले तो मुझे फिर से रिमाइंड करा. फर्स्ट सजेशन वाज कि जो आपके FE25 $7 बिलियन रखे हैं और लोगों के घरों पे पड़े हुए $4-5 बिलियन, तो उसको किस तरह टैप किया जाए. ये आपका आइडिया अच्छा है. मैं अभी वापस आऊंगा ना IMF से, तो गवर्नर साहब से बात करूंगा
और विल एफएस से भी बात करूंगा, सी इफ वी कैन डू समथिंग अबाउट। अगर 2-3 बिलियन यहाँ से हमारे भाइयों बहनों के उससे बाहर आ जाते हैं लॉकर से, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या उसके लिए एमनेस्टी देनी पड़ेगी आपको? यार पहले ये जवाब जरूर फिर आता हूँ, एमनेस्टी अब नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा एक वो एमनेस्टी। उसके बगैर वो कैसे आएगा कि डिक्लेयर नहीं है वो? So ये this is a good idea. FE25 is declared by the way. हाँ, वो तो खैर है। अच्छा, सेकेंडली जो आपने बात करी कि डेट मैनेजमेंट सही नहीं है, वो हो सकता है सही नहीं हो, आपकी बात दुरुस्त है। आई रिमेंबर ऑल्सो दैट हमारी डेट मैनेजमेंट की ऑफिस जब लास्ट टाइम मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो बहुत वीक थी। एक ही लड़का था जिसको बार बार नेशनल बैंक में वापस जाना था कराची में। वी ओ 40,000 या 42,000 बिलियन रुपीज माशाल्लाह से। So we really should have a very strong office with, but the thing is कि government में you don't even pay enough, you know. But I think कि यहाँ पे हम strength कर सकते हैं टीम की। आज भी मैंने किसी से बात करी थी, एक तो मैं उनसे कह रहा था कि रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार इस वाली उसको हमको हेल्प कर दो। And as you guys know that they've made some very fundamental mistakes by issuing bonds one day before they lowered interest rates, and one day after they increased interest rates. So those are really childish, but mistakes that cost us billions of rupees. So I think a good debt management office would be required. Better coordination with State Bank is also required. So those two things we will do, inshallah. आपने एक और भी बात कही थी, सजेशन थी Circular debt. हाँ, सर्कुलर डेट। यार मैं सर्कुलर डेट जिस तरह मेजर करते हैं ना, बड़ी अजीब तरीके से। सर्कुलर डेट जब हम आए थे तो इस तरह मेजर करते थे कि जब लास्ट टाइम 13 की बात कर रहा हूँ कि 500 बिलियन या 515 बिलियन वर आउटस्टैंडिंग। उसके अलावा एक PHPL पब्लिक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की डेट थी। तो सर्कुलर डेट देने का तरीका ये होता है हुकूमत का कि हुकूमत पेज बोरोज इन द प्राइवेट होल्डिंग पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट की गारंटीज पे, और उसको फिर आप पैसे दे देते हैं to you pay off the power sector companies, but that remains the government. लेकिन अब PTI वालों ने इन दोनों को मिलाकर गिनना शुरू कर दिया टू शो कि हमारी डेट ज्यादा होगी। उस वक्त 13 में उन्होंने दिखाया कि नहीं, ये जो डेट थी वो 1100 अरब थी, जबकि 1062 अरब थी जब मई में छोड़ के गया था। लेकिन वो शुरू में आपको याद है कि वो डेट के बारे में बहुत करते थे, 25,000 अरब, नॉट नोइंग कि भाई तुम जब जाओगे तो इससे थोड़ा ज्यादा हो चुका होगा, तो अब 42,000 अरब आ गए। And in fact, not just that, बल्कि वो liabilities को भी डेट में गिनते थे। अब वो तो वहां पे तो 52,000 अरब पहुंच गया। तो जिस तरह हम सर्कुलर डेट गिनते हैं, अगर मैं पावर होल्डिंग कंपनी के अंदर बोरो करके गवर्नमेंट कंपनीज को दे भी दूंगा तो सर्कुलर डेट विल स्टैंड द वे इट इज, बिकॉज पावर होल्डिंग की डेट बढ़ जाएगी। Eventually, of course, this is part of the government's debt and you have to subsume it in your balance sheet. At some point, you might as well just take it in your balance sheet. But the thing is कि इसका flow रुकना जरूरी है। I'm not so worried about the stock. I'm really worried about the flow. And अगर आप stock जितनी मर्तबा खत्म करते हैं, flow के लिए और आसानी कर देते हैं, ये वापस से और तेजी से बढ़ना होता है। And मेरा तो अपना अब भी ईमान है कि बिजली जो है वो सस्ती होनी चाहिए, and बिजली के कारखाने जो है वो 24 घंटे चलने चाहिए सारे के सारे। और अभी भी आप देखें कि 7,000 मेगावाट से ज्यादा बंद रखा हुआ है, क्योंकि कहीं फ्यूल नहीं है, कहीं पे सर्कुलर डेट का मसला है, कहीं पे मेंटेनेंस नहीं हो रही, सही नहीं हो रही। बट मैं इतना अर्सा बिजनेस कर चुका हूँ और ये मुझे पता है कि जो फैक्ट्री 3 शिफ्टें नहीं चलाती वो फैक्ट्री नफा नहीं करती। तो 3 शिफ्टें चलनी चाहिए, और आप बिजली के कारखानों की 2 शिफ्टें चला रहे हैं, तीसरी शिफ्ट बंद रखी है। आप 2,20,000 या 2,30,000 मिलियन गीगावाट आवर्स बना सकते हैं, और आप नहीं 2,20,000 मिलियन किलोवाट आवर्स बना सकते हैं, या 2,30,000 गीगावाट आवर्स बना सकते हैं, लेकिन आप बना रहे हैं 1,40,000 या 1,45,000। तो आपको वहां पे लेके जाना है जहाँ पे आपके मशीन पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं। वो करेंगे तो आपकी बिजली की कॉस्ट कम हो जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी कम हो जाएगी। होपफुली हम वेरिएबल कॉस्ट कम कर लेंगे, डीजल से बिजली बनाना छोड़ देंगे हम। ये सिंपल बात है यार, जिसमें आप मतलब वेर योर वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन द प्राइस एट विच यू सेल, वो तो बिजली बनानी नहीं चाहिए। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, और थोड़ी सी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, और दैट्स इट। वो कर लेंगे इंशाल्लाह तो बेहतर कर लेंगे। So Allah ne chaha, I think we will be able to do better there. Okay.
Raza Agha had a question, but he's put his hand down. I'm just wondering, Raza, have you withdrawn your question? Yeah. No, I'm happy to go. I'm happy to go. Or if you want, I mean, I'd be happy to take you when your video is turned on, so we can see your handsome Okay, face as all well. right. Okay, So, I mean, okay. Give me a couple. I'm almost home. at your destination? I'm almost home. So why don't I'll So wait and then come back. Let's take a question from Ali Salman right now, and then that'll give you time in which to get home. Ali Salman from the Prime Institute. Ji, thank you, Khurram. Ji, Assalamu alaikum, Miftah Sahab. Great to see you here. So budget चूंकि अब आने वाला है, आपने बात भी की बजट की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस वाले से मैं टैक्सेशन के ऊपर आपसे मैं सवाल करना चाह रहा था. When you were appointed finance minister in the previous term for about a year or less than a year, I remember आपने threshold increase किया था और उसको टैक्स पेयर्स ने काफी अप्रिशिएट किया था उस चीज को. लेकिन ये कि बाद में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई और फिर उनकी आईएमएफ से भी नेगोशिएशंस हुई, तो उन्होंने उस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया था फ्रॉम अ टैक्स कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो चीजें रिवर्स हो गई थी जो आपने उस वक्त टैक्सेशन के अंदर रिलैक्सेशन की थी. As an economist, as a think tank, actually we supported your position because हमारा एक इसके ऊपर ये low taxation, flat taxation और broad based taxation के ऊपर काम है. We also invited Dr. Arthur Laffer a few months back in Islamabad, you may recall, और इसके ऊपर हमने कुछ recommendations भी बनाई थी. So I'm interested in knowing your position. अभी आप IMF के पास भी जा रहे हैं, फिर बजट भी आ जाएगा, towards taxation policy. Especially, are you going to see, we often hear that taxation का हम tax to GDP ratio की बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारा view ये है कि ये एक misdirected debate है. हमें basically tax rates को कम करने की जरूरत है. So with it both income tax and GST and also tariff. So I was wondering, what is your take on it as you go to the budget? Thank you, Ali Salman साहब. देखिए, मेरी ये सोच है. It's not clear. It was not clear to me कि we are on the other side of the Laffer curve. जब मैंने टैक्स कम किए थे, I wasn't thinking कि हम टैक्स कम कर देंगे, रेट्स कम कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है. लेकिन मैं नहीं सोचता था कि बहुत रेवेन्यू कम भी होगा. उसकी एक वजह ये नहीं है कि हमारे टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा थे. मार्जिनल टैक्स रेट्स वर नॉट दैट हाई. 25-30% थे, 30% थे. लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपकी टैक्स इवेजन की जगहें बहुत हैं, और क्योंकि टैक्स इवेजन की जगह बहुत है, तो दैट पुशेस यू टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द लेफ्ट कर्व, जहाँ पे वो कॉनकेव होती है लेकिन नीचे आ रही होती है, राइट. सो मैंने जब ये, मैं आपको बताऊं, एक मसला भी है मेरे साथ, एंड वन ऑफ यू और मोर ऑफ यू कैन एक्चुअली हेल्प मी विद दिस. मैंने FBR से कहा कि यार चलो, I want to reduce these rates from 25 and 30 and whatever percent to 5, 10 and 15, 3 brackets, and first 100,000 rupees tax free. मैं कहा what would be your tax loss? तो उन्होंने कहा कि 90 billion, बाद में कहा 80 billion. और वो इन्होंने ऐसे किया कि जो भी उनका टैक्स था, they multiplied that by 15, divided that by 25, जितने 25% के ब्रैकेट में थे ना, तो वो सीधा सीधा बता दिया. तो मैंने उनसे पूछा कि यार what happens to the money when the money doesn't come to me, it goes to the people's pockets. What happens to that? Don't they save some and spend some? Yes. Well, if they spend, then I'm supposed to get 17% of whatever they spend, right? The answer is yes. When the 17% तो मुझे मिल गया, लेकिन बाकी जो 83% थे of the money that they spent, that becomes somebody else's income. And if that becomes somebody else's income, that guy is also going to save some and then spend some. So it's a multiplier effect. FBR के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसके अंदर ये हिसाब कर सके कि अगर टैक्स कम होता है तो इसकी मईशत के ऊपर क्या हिसाब आता है. अगर डिस्टोर्शंस कम हो जाते हैं, आपकी डेड वेट लॉसेस कम हो जाते हैं, तो इसके अंदर कोई मईशत की बेहतरी आती है, आपकी इनकम बढ़ जाती है मईशत के अंदर, आपके टैक्स कलेक्शन की डायनामिक ये क्या होती है. इट्स नॉट, इट्स डायनामिक सॉर्ट ऑफ स्टोरी, नॉट अ स्टैटिक स्टोरी. उनके पास कोई चीज ही नहीं है. वो तो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं कि 25 से मल्टीप्लाई कर लो 15 से, या 15 से मल्टीप्लाई कर लो 25 से डिवाइड कर लो, 15% टैक्स करोगे तो ये होता है. बट नॉनदलेस वो सिर्फ 80-90 अरब रुपए का खर्चा था. और उस वक्त 4000 अरब रुपए हम जमा कर रहे थे. मेरा गैस था कि 40 अरब तो मुझे इधर उधर से आई जाएंगे वापस सेल्स टैक्स, तो 40 अरब का नुकसान होगा. that was 1% of, less than 1% of what we expected to get next year
हमने 3800-3900 अरब रुपए मिले थे उस साल, हमको 4300 अरब रुपए हमको लग रहे थे कि मिलेंगे अगले साल। और जब असद उमर साहब आए तो उनको तो हमारी हर चीज बुरी लगती थी, तो उन्होंने इसको भी कैंसिल कर दिया बगैर IMF के गए। और इन दी एंड उन्होंने 400 अरब रुपए के नए टैक्स भी डाले और बहुत ज्यादा सेल्फ राइचियस कि हम सच बोलते हैं, वो सच तो बोला करो वगैरह वगैरह। एंड इन दी एंड दे एक्चुअली एंडेड अप कलेक्टिंग लेस मनी देन आई डिड. That was the only time in the history of Pakistan that nominal tax actually in a subsequent year was less than in the previous year. लेकिन मैं अब अगर God and IMF willing, if I can do it, I'd do it again this year. I'd again do it. मैं अब भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर it's not just it's equity का मसला है। पाकिस्तान में जो लोग नौकरियां कर रहे होते हैं, मुलाजमतें कर रहे होते हैं, उनका तो टैक्स कट जाता है, लेकिन जो नई मुलाजमतें कर रहे होते हैं उनका टैक्स तो नहीं कटता, तो वो तो बहुत ज्यादा इवेट करने की कोशिश करते हैं। और आप उनको लें, मैं ये मेरे जहन में जो एक टिपिकल था ना, वो एक 4 करोड़ रुपए कमाने वाला बिजनेसमैन था जोड़िया बाजार के अंदर, या लिबर्टी मार्केट में कोई दुकान वाला है, या इस्लामाबाद में है, वटेवर। वो 4 करोड़ रुपए कमाता है, मैं उसको बोलता हूँ तुम 30% मुझे टैक्स दो, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, वो नहीं देता। तो मैं सोचता था मैं उसको बोलूँ यार 15% दे दे भाई, तू मुझे 60 लाख रुपए दे दे और बाकी 3 करोड़ 40 लाख रुपए तो इज्जत से लेके घर में बैठते रहे, घर पे कुछ नहीं हो सकता, दिस इज व्हाइट मनी, तुम आराम से रहो। मैं तो मेरी कोशिश ये थी कि एक वो आ जाएगा। उसके साथ साथ हमने एक दो चीजें और भी करी थी। हमने कहा था आप गाड़ी भी नहीं खरीद सकते अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है टैक्स के अंदर। हमने मकान भी नहीं खरीद सकते आप रजिस्टर्ड नहीं है टैक्स में। तो हम उनके पीनलाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके एवेन्यूज कम कर रहे थे। हमने ये भी कहा था कि आप मकान जितने का खरीदेंगे, आपको हम ये नहीं कहेंगे कि आप उसकी DC रेट पे प्राइस लेके अपनी मर्जी पे लेके, लेकिन अगर आपकी प्राइस कम होगी तो हम 6 महीने के अंदर अंदर डबल प्राइस पे खरीद सकते हैं, जो हिंदुस्तान ने भी एक सक्सेसफुली किया था। इससे इवेंचुअली, और फिर उसके अगले साल बाद हम 75% महंगा खरीद सकते थे, उसके अगले साल 50% महंगा खरीद सकते थे। तो एक्विलिब्रियम के अंदर ये प्राइसेस जो हैं वो रिवील हो जाती, सही रिवील हो जाती। ये फिर ट्राई कर सकते हैं, पता नहीं अभी कितना अर्सा रहते हैं, लेकिन वी कैन ट्राई इट अगेन। But I still think that those were not really, and I promise you, I swear to you, those were not election year gimmicks. Those really were something that I believed that I could have done, and I think it would have been pretty good. Okay, that's great to hear, Chief. We have 2 questions coming from England now for you, Miftah. I see Raza has arrived in his destination, so we'll go to him first, and then Ahmed Saab has his hand up as well. So after Raza, then we'll go over to him. Assalamu alaikum, Miftah Saab, and thank you, Khurram, for arranging this. A couple of questions. One is, कि ये IMF talks की, अब I can pose these as questions and I can also pose these as suggestions. कि एक तो ये कि IMF discussions की strategy क्या है, वहाँ पे अगर आप if you want to sort of delay or implement the price of fuel over a longer period of time, you may want to consider an extension of the current IMF program. And if you can sell them a credible reform agenda, perhaps you can also, ask for perhaps a little bit of an augmentation of the program. I mean, that will certainly go a very long way in dealing with the investors that I deal with, which are bond investors. Secondly, in terms of international capital markets, I think, once you have the IMF program, I mean, the key will be an IMF program if you want to come to the Eurobond market. And in that sense, there's a couple of things you should look into, or get the DMO to look into, which is World Bank backed issuance. There's also, US Treasury does sovereign backed issuance. I mean, they've done it for Jordan, they have done it for Lebanon, they've done it for Tunisia and Egypt as well. So you basically pay a very small spread over the US Treasury, and you pick up money. And then social and green bonds are obviously an avenue that you need to talk, think through. Social, particularly if you focus on, actually, I'll leave it there, and if the conversation goes. Finally, I think what is very important for, at least for international investors, is what you intend on the SBP autonomy law. Above dekh lein, whatever your agenda is, but my suggestion would be that both from a program perspective, IMF, and from global investors perspective, उसमें अगर tweaking ज़्यादा हुई या उसको scrap करने की कोशिश की, तो I mean it will show in your borrowing costs, and that's it. Borrowing costs aren't looking very pretty as it is, isn't that right, Raza? नहीं जी, the curve is completely inverted. तो वो
markets जिस तरह perceive कर रही हैं, वो कह रही हैं short end में, so it's completely blown out, and the reason for that is, you know, like Miftah Saab said, के वो FX reserves. Have things eased a little bit since the politics began to become a bit clearer? Yeah, so the bonds, look, I mean, before the Easter break, the front end had rallied about 2 points. The belly and the long end was up about 2.5 to 3 points. I mean, but it's all in double digits. I mean, there's no way Pakistan can tap markets at the moment, right? So what is needed is कि भाई वो होता है ना credible reform anchor कि IMF कहे कि चाहे एकदम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना भी हो, वो कहें भाई हमारी मिफ्ता साहब से बात हुई, अब हम पाकिस्तान जाएंगे, वहां पे हग किस and we'll try to make this work, and वो बहुत जरूरी होगा. Miftah, how do you intend to breathe confidence for the foreign investors? And अच्छा, ये मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँ. थैंक यू सो मच रजा साहब, वंडरफुल सजेशन फॉर कि मैं ज़्यादातर लोगों को इधर जानता हूँ, लेकिन जब भी कोई स्पीकर आए तो अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लो थोड़ा सा मुझे अच्छा होगा. sorry, yes, we should have been doing that. Don't know Raza, sorry. I'll introduce myself. I'm a sovereign debt analyst. I've been a macroeconomist and sovereign debt analyst for about 20 years. I've worked at the State Bank of Pakistan. I worked at the World Bank. उसके बाद मैं investment banking में हूँ 2006 से. And I primarily work on emerging markets. Right now, I'm with one of the world's largest asset managers, 1.3 trillion AUM, and I run their sovereign debt strategy. देखें, ये आपकी बात सारी सही थी about the tenor of our program and stuff like that. मेरे जहन में कुछ strategy है. सच्ची बात है कि I mean I had a 3-hour meeting with Raza Bakar, the governor of State Bank, 2-3 days ago. He was very kind to come to Islamabad and meet with me. Then yesterday, Raza and I did an hour-long meeting with Masood Ahmad Saab, the former director of IMF, Pakistani, and he was very helpful. The FS, Finance Secretary, and I have also had discussions. I met with the res rep of the IMF. I met with the country director of the World Bank. I today had a Zoom meeting with the mission chief at the IMF. FS has had a Zoom meeting. Tomorrow we're going to share some more budget numbers with them. So we're engaged with them and we have some ideas in mind about what we want to do. I don't want to discuss too much of that right now, but there are certain ideas that we have, and we'll try and do this. Somebody had said that, Agdas Saab had said this, I think, okay, we should have somebody from Foreign Office also. So there are always people from the Foreign Office. Embassy के staff तो हमारे साथ होता ही है, ambassador साहब भी होते हैं, या है एक तो हमारा economic minister भी होता है, तो जब हम लोग वहाँ पे होते हैं, so वो तो होते हैं. अगर US strategy हमारे bond को back कर देती है, so nothing like it, But that may have some political ramifications, though. I can tell you that. हम तो गालियाँ खा चुके हैं ना उसकी, अब तो I mean, half of the nation, or well, at least half of the nation on Twitter, including bots, believe us to be lackeys of America anyway. So, come on, masters, I'm not slaves of America. So these masters should now at least back up my bonds. But I mean, but we'll see. मैं एक चीज जरूर कहूँगा कि ये the fact कि मेरा paper जो है वो 70 cents on the, या 75 cents on the dollar पे किराया bond, that is not good for me. That's this constrained my options too much, and I really wanted to come close to par. And इसका default risk कम हो जाना चाहिए. So I need to signal to the market that that's happening. And secondly, it's kind of important to me that we restart the fund program sooner rather than later, and that would help. The losses are just unsustainable. Just to give you an idea, it costs this year. It will cost, including the salary increases that I think happened in March, 15% salary increase the PTI government awarded because of high inflation. The cost of running the civilian government will be 529 billion rupees. Okay, 529 billion rupees. The cost of all pensions, military and civilian, is, I think, about 350-400 billion rupees. It's less than 375 billion. So that's together they are like
these two things are 900 billion rupees. Okay, that's the entire civilian government plus the entire pension program, including the military pension. Just the loss this month would be on petrol and diesel subsidy would be 72 billion rupees. Annualized, that's 840 billion rupees. That's more than running the civilian government. That's 50% more, 75% more than running the civilian government. That's just not sustainable. With the same tax base, I cannot support one more Pakistan civilian government. It just makes no sense. And who are you subsidizing also? So I gave an example on TV today. I'll give you an example again. So I have a Land Cruiser and it has 80 liters capacity. So every time I get 80 liters in the Land Cruiser, the government of Pakistan, which is people of Pakistan, all of you are paying me 1,680 rupees for no reason at all. And it's not all of you because you guys are not average Pakistanis. You guys are several standard of deviation richer than average Pakistani. The average Pakistani makes 30,000 rupees. It's about my driver's income. So you're asking my driver to pay me 1,600 rupees every time I get fuel. But that's not the worst part of it. When I send a candy container from Karachi to Islamabad, it uses 1,000 liters of diesel. The government of Pakistan is paying Candyland 50,000 rupees to transport its candies from Karachi to Pindi. How is that fair? So, I mean, it's not even targeted subsidy. You know, this is something that Khan Saab came up with just when he knew that his days were numbered. I'm not saying that he was trying to necessarily put roadblocks in our way or, you know, or to use more colorful languages. He was not trying to put, you know, landmines, but he was trying to desperately save his government, you know, come what may. But this is a weird thing that you guarantee, you know, the price of fuel when you cannot guarantee the price of oil. So anyway, so that's a really difficult thing for me to handle right now. That does sort of beg the question, okay, how do you plan to now deal with this problem? You've outlined the problem very well, but what are you going to do about it, to put it bluntly? Well, I mean, I think that the government has to revisit this price. I mean, I look at those 6 tweets I did a couple of days back. I mean, I've said clearly all these things that the government really has to revisit. I mean, it's a politically difficult decision, but you know, I mean, these are really difficult decisions, but this is something that they have to do. I mean, you are basically, you need, like, you know, you really need to make these decisions. I mean, what is the choice? What is the choice? I mean, what is the choice? The choice is to let IMF go. No, I was hoping for some specifics in terms of, do you plan to, you know, slowly unwind these? I mean, have you thought about it? How far into the specifics have you managed to get when you? I swear to you, the whole of March, I was thinking of stupid, no confidence. And since the stream one, I've only thought of petrol subsidies. मतलब मुझे तो बच्चों का नाम भी इतना याद नहीं है जितनी पेट्रोल की सब्सिडी याद है. I think about nothing else, but I will leave it at that. Okay, chalo, we have Ahmed Pirzada Saab. He teaches economics in Bristol, and is also very active on Twitter and has very useful and in-depth things to say very often. Ahmed Saab, glad to have you here with us. Thank you, Khurram Saab, for inviting me. So my question is related to what you guys are discussing on the fiscal front. So just to sort of set the context, so last year, around the same time when Shaukat Saab came in, so he basically immediately after went ahead with a stimulus, which was about 2% of GDP, right? And that sort of destabilized the economy on the external front. We saw CAC shooting up because of demand side pressures, which were then made worse because of what we saw happening with the commodity prices. So now, coming to today, now what you are suggesting is that the fiscal deficit for this year is going to be way, way higher. The number you're giving, 5.6, that essentially that makes up around 9% of GDP under the new base. Now, this is only going to happen in like the 3 months we have got before the next budget. And this is much bigger compared to what we saw happening in the same time last year. And the implications for the current account deficit, then they are pretty obvious as far as I'm concerned. And given the discussion we were having just before, what Raza was saying around the credit default risk, which has now shot up to 12% from around 4% just a few weeks back,
obviously financing CAD is going to be a nightmare if we go ahead with this. And that sort of opens the question around how do we plan to sort of manage our fiscal side of the story, because that's directly linked to the external side of the story. And then we've got two challenges there. One is we've been discussing oil prices. So that's obviously one very big challenge. But that's about $200 billion. 200 billion rupees we are talking about over the next 3 months, if we say it's 70 billion every month. But then there's another challenge which we are not discussing, which is basically on the power side. So if you look at the numbers for today, for this month, what you see is that just the fuel cost per unit of electricity for more than half of the power plants in Pakistan, that's more than 30 rupees, right? And that's almost twice of the average tariff which we currently charge to the consumer. And how much deficit is that going to generate? I think that number might be much bigger than the oil bill we are talking about here. So given these challenges and how important fiscal side of the story is to to make sure that the external side remains stable, especially under the time when the credit default risks are super high, and debt servicing is already high in any case over the last three years, that's been the case. What is the game plan you've got in mind? I mean, I'm pretty happy I'm not in your shoes and you are in your shoes, but what do you have anything there? So, because if we don't sort this out, then the next year is crisis throughout from day one to the end. Thank you. Well, if you want to, Ahmed bhai, change shoes, and I can teach micro and a game theory course. But seriously, Ahmed sir, first of all, I really appreciate not just your question, but मैं आपके tweets भी अक्सर देखता रहता हूँ, and some very thoughtful tweets and some analysis you've done on trade numbers and price effects and quantity effects and all that. So thank you very much for doing some good work and then posting it in very readable, easy to understand tweets. देखिए, आपने कहा, you said के, 200 billion in the next 3 months. That's just the money going out of the government, okay? What Shaukat Tareen Sahab had promised IMF was 30 rupees of levy and 17% of income tax, sales tax. So that is about 60 rupees of taxes. Rather than getting 60 rupees of taxes on diesel, we are paying 50 rupees. So that's minus, that's 110 rupee delta. And in petrol, it's about 82 rupees delta. So it's also a loss in revenue. So that's a huge loss. Even if you curtail, I don't know whether the deficit will be less than 5,000 billion rupees, which is still, even then it's, about 8.5% of the new GDP, which is very, very high, given that of the new GDP, your tax is also 9% of GDP. So your deficit is as big as the tax. So that's horrible. अब देखें, जो मेरे अमेरिका से मैंने पढ़ा था, PhD करी थी, तो मैं बड़ा राइट विंग फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट होता था, शिकागो टाइप का. लेकिन ये पाकिस्तान ने मुझे लेफ्टिस्ट बना दिया है इस मुल्क में. अब मैं आपको बताऊं कि देखिए, हर मर्तबा हम जब भी करंट अकाउंट डेफिसिट में चढ़ते ना, हम करंट अकाउंट डेफिसिट करते हैं बाय मेकिंग रिच पीपल रिचर. ये टर्फ लोन हमने जो दिए, 1% पे हमने लोन दे दिए. जो स्टिमुलस हमने जितने भी दिए, हम सारे अमीर लोगों को देते हैं. रियल एस्टेट सब्सिडी गरीब आदमी को तो नहीं मिली, रियल एस्टेट एमनेस्टी गरीब आदमी को तो नहीं मिली है, इंडस्ट्रियल एमनेस्टी गरीब आदमी को तो नहीं मिली. मैंने भी जो एमनेस्टी दी है गरीब आदमी को तो नहीं मिली. हम जितनी भी चीजें देते हैं, मराद हमेशा अमीर तरीन लोगों को देते हैं, मिडिल क्लास को भी नहीं देते, अमीर तरीन लोगों को देते हैं. और फिर जब मईशत फास्ट हो जाती है और मतलब आपकी करंट अकाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि आपका इंपोर्ट बहुत बढ़ जाता है, तो जब आप मईशत स्लो करते हैं तो सबसे पहले नुकसान तो गरीब आदमी को होता है. मुझे तो कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे फैक्ट्री के वर्कर्स जो है उनको ले ऑफ करना पड़ता है. So it's a very rigged economy and we have to really think of a fair system. And अगर हम थोड़ी सी फेयरनेस कर लेंगे, पाकिस्तान के अंदर वो इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी का ट्रेड ऑफ खत्म हो गया है. मैं तो ये इस बात पे कायम हूँ कि अगर आप इक्विटेबल सोसाइटी कर देंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. तो थोड़ा सा हमको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हम क्या करें. अब जहाँ तक आपने बात करी कि हम क्या कर सकते हैं, तो एक मसला तो ये है ना कि देखें, अगर आप 8-9% का बजट डेफिसिट करेंगे तो
there is such a thing as twin deficits, right? I mean, one-to-one relationship nahi hai, because wo behavior change ho jata hai. Your propensity to save and your propensity to consume changes a little bit. But having said this, if you run 8% budget deficits, you are going to have high current account deficits. I don't know how else do you fund this. Pakistan ke andar aapka jo investment rate hai, it's actually more than your savings rates. The private sector has no money to fund government this thing, right? तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे एक ही जगह से आएंगे और वो पैसे आएंगे फॉरेन सेविंग्स, और फॉरेन सेविंग्स क्या है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स. तो ये हो रहा है हमारे यहाँ. सो आपने बजट डेफिसिट भी कम करना है. आप यू कैंट रन लाइक 5,000 बिलियन रुपी डेफिसिट से. वो कहाँ से आ गया करंट अकाउंट डेफिसिट? हेलो, करंट अकाउंट डेफिसिट तो होगा ना भाई. कहाँ से फिर मतलब कहाँ से पैसे आएंगे वरना? एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. So ये थोड़ा सा fiscal discipline करना पड़ेगा. Again, it's not a PTI thing, it's not a Muslim League thing, it's a Pakistan thing. I mean, हमने कब जाके वो किया है? मुशर्रफ साहब के ज़माने में तो इतनी fiscal space मिल गई थी बाहर से एड शेड की वजह से, हम वो fiscal deficit भी खा गए. उधर शौकत अजीज साहब जो थे उसने वो भी मरवा दिया हमको. जब 2007-2008 में वो गए थे तो 8.1% का करंट अकाउंट डेफिसिट आया. पूरे साल इन्होंने पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई. फिर ये भी इमरान खान साहब जो है वो 1.5 हुकूमत करके छोड़ के चले गए. 1.5 पाकिस्तान 1.75 मोर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सपेंसेस. So what do I do? I mean, but as a nation now we have to rethink this, and it's not a matter of one political party. हम तो हमेशा से कहते हैं कि seriously एक कौमी जिरगा होना चाहिए जिसमें तमाम stakeholders बैठे हैं. आपको you'll have to relook the NFC award, you'll have to relook a lot of things. You cannot have such high deficits. I mean, this is not even. It's not even safe now in terms of national security. It's not even safe. Gee, sorry. Okay, I think let's move on. हमारे कुछ मीडिया के दोस्त हैं उनके हाथ ऊपर हुए हैं. So let me start with Gibran Peshimam. He's the head of Reuters here in Pakistan, based in Islamabad. Go ahead, please. Hi, Miftah. Sorry to take it away from the theoretical and more in towards the practical in the news. If I were to ask you that based on your meetings that you've had and conversations that you've had, is the sense that you get that in order for you to start officially talks with the IMF, the 7th review talks, you would first have to reverse these fuel subsidies, only then the talks? Is that the sense you get? So are we looking at reverse these first, then start the talks, and until then it's all courtesy calls? And so what do you think about this? Is that a fair assessment? What's your assessment based on the conversations you've had? A very good question. देखिए, मुझे पता है कि शौकत तरीन साहब उनसे बार-बार MEFP मांग रहे थे ना, प्रोग्राम को मेमोरेंडम मांग रहे थे, तो उनको दे नहीं रहे थे. लेकिन टॉक इस चीफ अगर IMF को दे भी देती है तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी जो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा था, मुझसे पूछा है कि आपके ख्याल से क्या स्टेप्स करने चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो भी स्टेप्स हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने पूछा कि आपके ख्याल से क्या स्टेप्स करने चाहिए. तो उन्होंने वर्बली मुझे कुछ चीज़ें बताई, अगर वो लिख के दे दे तो वो मेमोरेंडम होता है, राइट. सो अब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उसको कहा कि देख यार, मैं तो एक ही मुल्क का वजीर खजाना बनाऊँ, दूसरी मरतबा बनाऊँ, लेकिन एक ही मुल्क का बनाऊँ. तुम तो 1000 मुल्कों से मिलते हो, मतलब 10 मुल्क से मिलते हो, तुम लोगों को तो क्रॉस कंट्री एक्सपीरियंस होता है. तुम हमको बताओ कि हम इधर फंस गए हैं, अभी कमोडिटी की प्राइसेस महंगी हैं, इतनी सब्सिडी दे दी है, नई हुकूमत आई है, तो हमें क्या करना चाहिए. लेकिन छोड़ दें IMF को. सपोज कि IMF नहीं और आपको कोई मुल्क आपका सऊदी अरब या UAE या कोई भी मुल्क आपको बोलता है कि यार तुमको हमने $10 बिलियन ऐसे ही प्यार में दे दी, ना हम तुमसे पैसे वापस मांगेंगे, ना कोई और शर्त रखेंगे, ये लो $10 बिलियन, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड पार्टी. फिर भी क्या आपको इस किस्म की सब्सिडी देनी चाहिए, which is costing you more than your entire civilian government? I mean, seriously, is this prudent fiscal management? So, but obviously, मैं तो यही कहूँगा कि यार IMF ने कहा था, लेकिन मतलब अगर IMF नहीं भी कहे तो मैंने भी इकोनॉमिक्स में PhD करी है यार, कोई खुदा का खौफ भी तो होता है. मतलब like I said कि आप कैंडी लैंड को every time we ship chocolates and toffees to Islamabad,
You're giving me 50,000 rupees subsidy. What the hell for? Miftah, I take it we'll be getting no specifics here today, huh? Because this is the second time you've been asked. In fuel price subsidy, fuel price caps. Is this a prior action for dealing with the before getting going with the IMF? 1985 के अंदर 1985 में अमेरिका और सोवियत यूनियन की वो स्टार्ट टॉक को सेकंड राउंड हो रहा था। रोनाल्ड रेगन के ज़माने में अमेरिका का उस वक्त ब्रेजिडेंसी था सदर, मुझे नाम याद नहीं है, जो बंदा जा रहा था उससे निगोशिएट कर, तो अमेरिकन जर्नलिस्ट उससे सवाल पूछ रहे थे बहुत सारे, तो उसने कहा यार देख मैं भाई रशिया से जाके निगोशिएट करूंगा, मैं अपने जर्नलिस्टों से निगोशिएट नहीं करूंगा ना टीवी पे, तो क्या बोल सकता हूँ, आई कैंट गेट इनटू स्पेसिफिक्स, पर मुझे वापस आना तो फिर जो भी होगा मैं बता दूंगा। वी कैन डू दिस अगेन, आई मीन दिस इज सो मच फन, थोड़ी सी जल्दी कर लेंगे बट वी कैन अगेन। ठीक है, let's move along because there are other people with their hands up as well. Sticking with our people in the news for a moment, Bilal Mohal from BBC Urdu has his hand up. Bilal, go ahead. थैंक यू खुर्रम। मिफ्ताह साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, वो ये कि आपसे अभी जितनी भी डिस्कशन हुई, सो मोस्टली यू सेड के टैक्सेशन रिवाइज करेंगे स्लैब्स, अगर आईएमएफ ने एग्री किया, फ्यूल सब्सिडीज आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि वो ख़त्म करनी पड़ेंगी, तो क्या हम लोग जो है वो जो अपकमिंग बजट है विच इज़ फ्रॉम 2 months फ्रॉम नाउ, क्या ये मोस्टली एक आईएमएफ लेड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर ही मबनी बजट होगा, या आप कुछ 3-4 चीजें पब्लिक बेनिफिट के लिए रिलीफ, जिसको हम रिलीफ कहते हैं मीडिया में, वो भी आप कुछ प्लान करें? अगर वो हैं तो वो क्या है, और अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं? देखिए, जब हुकूमत पाकिस्तान, अगर एक चीज सोचें आप कि हुकूमत पाकिस्तान आपसे टैक्स लेती है, हम समझते हैं कि वो पब्लिक के खिलाफ है, रिलीफ नहीं है, लेकिन उस टैक्स का क्या करती है? अगर उस टैक्स से हम रोड बना रहे हैं तो वो पब्लिक बेनिफिट है ना, वो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर उस टैक्स से हम कौमी दिफा कर रहे हैं ताकि कोई और मुल्क आके हमारे ऊपर कब्जा ना कर जाए, तो वो भी एक बेनिफिट है ना। अगर उस मुल्क से हम डैम्स बना, उस पैसों से डैम्स बना रहे हैं, उस पैसों से स्कूलें बना रहे हैं जिसमें हम गरीब बच्चों को तालीम देने का प्रिटेंशन कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको तालीम दे रहे हैं, तो मतलब ये चीज़ें तो हम करेंगे ना। तो अब ये सब चीज़ें करनी है। क्या आपके मुल्क में इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है? क्या नहीं है? क्या आपके मुल्क में, आपका मुल्क का बॉन्ड जो है वो 100 रुपए का बॉन्ड दिसंबर में जो ड्यू है ना, वो 96 रुपए का बिक रहा है। दिसंबर तक के लोग जो है उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। मतलब पीपल आर, मतलब जब आपका बॉन्ड नहीं बिक रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग यू फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप उसके ऊपर जाके 400 अरब रुपया जो है, 400 अरब डॉलर जो है, उसको आग लगा रहे हैं हर महीने आप सब्सिडी देकर, और फिर आप बोलते हैं अच्छा जाओ यार कर्ज लेकर आओ, मिफ्ता इस्माइल जाओ IMF से कर्ज लेकर आओ, तो IMF वाला ही तो पूछेगा ना कि यार तुझे कर्ज की जरूरत है तो वो 400 अरब रुपया तो कर्ज जो तू थूक रहा है, मतलब फूक रहा है, उसको कम कर ले। ये तो बेसिक सवाल है ना। अगर आप मतलब किसी से कर्ज लेने जाते हैं, $1 बिलियन मांग रहे होते हैं, लेकिन आप 7 400 मिलियन डॉलर्स की सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो कोई सवाल तो ये पूछ ही लेगा ना। ये टारगेटेड सब्सिडी भी नहीं है, ये कोई बिस्ट का प्रोग्राम, एहसास बिस्ट का प्रोग्राम तो नहीं है कि आप गरीब लोगों को पैसे दे रहे हैं। तो थोड़ी बहुत चीजें तो हमको खुद भी ठीक करनी होगी ना। तो बजट जो होगा भाई एक रियलिस्टिक बजट होगा, बिल्कुल 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 जहां तक हद मुमकिन हो सकेगा आवाम को रिलीफ देंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि महंगाई कम हो। देखें सबसे बड़ा जो हमारी हुकूमत अगर आई और इमरान खान की हुकूमत गई और जो हमने चीज़ करी थी, उसमें हम समझते हैं कि महंगाई का एक बहुत बड़ा रोल था। और महंगाई क्यों आई है? महंगाई आई है इसलिए कि आपकी करेंसी डिवैल्यू हुई। करेंसी इसलिए डिवैल्यू हुई कि आपने यहाँ पे करेंसी ज़्यादा छाप भी दी, मनी सप्लाई भी बढ़ गई, बहुत सारी और चीज़ें हुई। तो थोड़ी सी अगर आप फिस्कल डेफिसिट आपका बहुत ज़्यादा था, अगर आप थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट कम कर लें, शायद आपकी करेंसी इतनी डिवैल्यू ना हो तो इधर इतनी महंगाई नहीं आएगी। बिल्कुल कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स थे। ये जो आपने 30-30 रुपए के अहमद साहब फरमा रहे थे, अहमद पिरजादा साहब के 30-30 रुपए के आपने डीजल से बिजली बनाई है। जनवरी के अंदर मिसाल के तौर पर 593 मिलियन किलोवाट आवर इन्होंने डीजल से बनाए, जो 10 साल का रिकॉर्ड था जब हम लोग डीजल से एक्चुअल बिजली बनाते थे। आप जाके देख लीजिए, जर्मनी डीजल से नहीं बिजली बनाता, सऊदी अरब डीजल से बिजली नहीं बनाता। ये पाकिस्तान के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि हम डीजल से बिजली बना रहे हैं? क्या पागल है हम लोग? मतलब हम भूल गए थे कि हमारे पास LNG खरीद लें या गैस खरीद लें? फर्नेस ऑयल हम इम्पोर्ट करके बिजली बना रहे हैं, पागलपना है।
एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पावर प्लांट है कि एक्सेस लगा दिया, दूसरी तरफ आप वो प्लांट्स यूज कर रहे हैं जिनकी 28-30% एफिशिएंसी है। तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी हैं, उसको भी इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। कुछ बजट डेफिसिट वगैरह अगर कम कर लिया तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन उधर से कम हो जाएगा, और इस तरह ही करेंगे। लेकिन मतलब मेरा 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 मकसद जो अगले बजट में होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, will be not to give any direct relief to particular interest groups कि यार रियल एस्टेट वालों को ये दे दो, धागे बनाने वाले को ये दे दो, फर्टिलाइजर बनाने वाले को ये दे दो। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आम बजट ऐसा हो कि जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर पाकिस्तान में कम हो, आम आदमी को थोड़ी सी इन्फ्लेशनरी कम हो। दैट वुड बी माय नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। I can't hear you. Khurram, we can't hear you. Sorry about that. मैं कह रहा हूँ अभी we'll move on to Ali Hasnain in a moment, लेकिन अहमद पीरज़ादा साहब ने भी एक रिस्पॉन्स दिया है आपके लास्ट कमेंट पे कि वो कह रहे हैं कि the cost, the RLNG fuel cost is 30 plus for many plants as of now. It is much more challenging than just efficiency, I think. And Ali Khizr bhi agree kar rahe hain, keh rahe on marginal cost, diesel is cheaper as well as furnace oil. So I'll invite both of them, Ali and Ahmed Saab, if you wish to come forward and engage a bit further इसी point पे. पर ये काफी important है कि I think अभी LNG का एक और भी अभी टेंडर आया था, and you did not get a very encouraging response in that, है ना? ये क्या जो परसों का था मेरे ख्याल में। थैंक यू खुर्रम। मिफ्ता भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने ये जो जनवरी में ऑनवर्ड उस वक्त इन्होंने डीजल पे ज्यादा बनाया, उस वक्त फर्नेस ऑयल जो है पहले इंपोर्ट कर लिया था, फिर रिफाइनरीज नहीं बना रही थी, दैट वाज मिसमैनेजमेंट। कम टुडे आगे इस वक्त जो आपने 6 टेंडर फ्लोट किए हैं उसके ऊपर एलएनजी के, 3 मई के लिए, 3 जून के लिए, और आपको जो प्राइस मिलेगी वो इस वक्त जो मार्केट चल रही है उस पर $30-32 मिलेगी। आपका 18 से ऊपर 17 से ऊपर होता है, चले प्रीमियम डालें, 19 से ऊपर डीजल इस वक्त जो है ना वो आपका मेरिट ऑर्डर में ऊपर आ जाता है। फर्नेस ऑयल आप यहाँ से 70% आप अपना डीजल जो है लोकल रिफाइनरी बनाती है हमारी, फर्नेस ऑयल भी ये बनाती हैं, इस पे इंपोर्ट बिल का भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्रूड ठीक है कहीं पे इंपोर्ट हो रहा होगा हमारा, बट ये है। तो मतलब इस वक्त एलएनजी का चैलेंज आप कैसे ले रहे हैं? आपको वो पता है गनवर भी डिफॉल्ट कर रहे हैं, पता नहीं देता। मेरे भाई ये बात नहीं है ना यार, मतलब अगर आप छुरी हाथ में रख के क्रिकेट खेलेंगे तो बार बार चोट तो लगेगी ना। थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर ले आदमी, छुरी साइड पे रख दे। आपके पास 12 शिपमेंट इस वक्त आप ला सकते हैं, राइट? आपको 12 की जरूरत है। आज कराची के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि इंडस्ट्री बंद है। कराची में ले लेगी। लेट मी फिनिश। आप 12 से लेकर 14% के दरमियान आपको लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल के टेंडर्स मिल सकते हैं आज भी। 3 से 5 साल, नॉट स्पॉट। आप टेंडर फ्लोट तो करें यार, बिस्मिल्लाह तो करें, और आप देखें हम करके दिखाएंगे आपको। आप देखें, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टेंडर महंगे ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चोरी कर रहे हैं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ी तो कर रहे हैं ना। दिस इज कॉल्ड अदर पीपल्स मनी। जब किसी और का पैसा लगाओ तो आपके दिल में डर ही नहीं होता है। दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट सर्विंग कंपनीज लूज मनी। आज एसएसडीसी वालों से मैं बात कर रहा था, मेरे ख्याल से 16 या 17% यूएफजी है। हमारे जमाने में भी यूएफजी बहुत ज्यादा थी। मैं आपको सर्च लगा के बता रहा हूँ, अगर इसको बेच दो आप ना, किसी को सेठ को दे दो, किसी चिन्योटी मियाँ साहब को दे दो, देखो 2 महीने के अंदर कितना करता है यूएफजी, कैसा होता है। दे दे सर, दे दे, अब हम देने जाएंगे फ्री दे यार। दो भाई आपने एक अभी मैं बेचने जाएंगे ना एसएसडीसी, आप फिर जेल में बंद कर देंगे। 3 साल से मैं ईसीएल पे हूँ। आज आपका इस मुल्क का सुबह वजीर बनूंगा, अब मैं अभी इस वक्त ईसीएल पे हूँ, कसम से मैं आपको सच बता रहा हूँ। आज सुबह मैंने कोर्ट में अप्लाई किया कि मुझे ईसीएल से निकालो, तो मैं कल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आईएमएफ में जाऊंगा। तो मतलब कल परसों हम बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब, शायद अब्बासी साहब थे, मैं थे, दीगर लोग थे, और हम बिजली और गैस वालों से प्रेजेंटेशन ले रहे थे। तो हम कह रहे थे कि आप कितने अरसे की प्रेजेंटेशन देते हैं, कितने अरसे की फोरकास्ट देते हैं? तो बोलते हैं 3 महीने की। तो हमने कहा एलएनजी कोई ऑफ द शेल्फ तो नहीं है कि आपने उठा के ले लिया? तो उस आदमी ने कहा कि सर नैब की वजह से हम डरते हैं, हम क्यों लंबी फोरकास्ट देते हैं तो गलती हो जाएगी, ज़ाहिर सी गलती होगी तो नैब पकड़ लें।
और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एक हुकूमत के अफसर ने कहा कि देखो आप लोग सियासतदान लोग हैं ना, आपकी इज्जत भी अच्छी हो जाती है और आप लोग साहिब हैसियत भी होते हैं। हमारे यहाँ अगर हुकूमत का अफसर जो होता है उसको बड़ा मुश्किल हो जाती है। मैं आपको एक सच बता रहा हूँ कि एक हुकूमत के अफसर को नैब बुलाती है कराची के अंदर तो शायद अब्बासी साहब उसके जहाज की टिकट देते हैं और मैं उसके होटल का खर्चा देता हूँ। मैं कसम खा के बता रहा हूँ, ये हाल किया हुआ है आपने। इतना ईमानदार आदमी आप नहीं जानते। तो अब मतलब ये तो खत्म चीजें भी हमने देखनी। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, 3-3 महीने 3-3 साल के 5-5 साल के आप कर लें यार। 12 तो कम से कम चाहिए होंगे ना, तो ले लो, खत्म कर लो। आपने जब 30 साल के प्लांट्स लगाए हुए हैं, you actually know what has happened. So Sui Northern has given a 30-year guarantee to Bikki Baloki and Haveli. We will provide you, gas for 30 years. So Sui Northern needs to have gas for 30 years, right? It has asked PSO for a back-to-back guarantee, which PSO has furnished it. So PSO has then said to, and SSGC has gotten a 15-year terminal. So if everybody's interest to mitigate risk है यार, लंबे contract कर लो, जान छूट जाए। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज नॉट निम्बल के 1 महीने में कॉन्ट्रैक्ट करे। देखें आज भी मैं आपको सच बताऊं, और इनकी गलती नहीं है, आज भी आपको कभी कभी कोई डिस्ट्रेस टाइप का कार्गो मिल जाता है जो मार्केट से मतलब 30 का नहीं मिलेगा, 20 का मिल जाएगा। डिस्ट्रेस से मिला देगा। वो चीन में जा रहे थे, चीन के पास एक्सेस हो गए फॉरेन स्टॉक्स। कभी कभी फोरकास्ट से ज्यादा हो जाते हैं, कुछ मसला हो जाता है, कोई स्ट्राइक हो गई, कोई चीज प्लांट बंद हो गया, मिल जाते हैं। लेकिन वो 2 दिन के अंदर हम हुकूमत पाकिस्तान तो कार्गो नहीं खरीद सकती। हमको तो पहले सेल परचेज एग्रीमेंट वैट कराना पड़ता है वगैरह वगैरह। ये खत्म करें ना मिफ्ता भाई, सारा कुछ इसको खत्म करें, ये टेंडरिंग खत्म करें, ये पेपरा रूल इसके अंदर से निकालें। ये तो ट्रेडिंग डिसीजन है, ये तो खत्म करें आप, और फिर जेल जाएं। नैब खत्म। Okay, we can stick with the energy theme a little bit longer if before we come to you, Ali. Although I will say this. This is such a good format that if you want to do an energy theme whole talk for an hour or 2 hours, I will request and I will convince Shahid Abbasi. By all means. I mean, we can work with this format further as well. But abhi ke liye, agar if there are more energy related questions, and Ahmed Saab, you had some input. I'm wondering agar if you feel I also know a lot about confectionery manufacturing, if you want to ask about that. Okay. No, I don't have anything specific to add. I just wanted to make a general point that the fuel cost is pretty high just along all types of fuels. So it's a general fiscal challenge which is to be dealt with on the fiscal front, not necessarily just on the efficiency front. Obviously, there must be a margin there, but it's really a fiscal challenge what we are facing right now, given the commodity prices. That's it. Didn't have anything specific. Fair enough. Achha, we can move on to Ali Hasnain in that case, unless there is another energy-related question here. But since I'm not seeing one, we can move on to Ali Hasnain, teaches economics in LUMS, micro by profession, macro by hobby, I believe. Not at all macro by hobby, but more development background. I guess, first of all, it's very heartening to hear your grasp of the problems that we've all witnessed. But also, many of these problems are obvious to most people. So, जो आप fuel subsidy की बात करें, जब ये आया था, तो I think there was a broad consensus in Pakistani economists that it was wrong. Many of us wrote about it. Just as there was a consensus when the dollar was kept at 100 by your earlier administration, तब भी तकरीबन सारे economists उसको रोते थे. But क्योंकि हमारे मसाइल economy के काफी हद तक simple हैं. I also trust that you'll be able to solve the IMF issue. They have no credibility in my eyes because they always come around and give Pakistan more money, or you'll find money with sort of a partner country. So those are tactical skirmishes that we have to fight, but these are things that you'll settle. My interest is in sort of long-term development. And you mentioned, you yourself mentioned the lack of exports. I was looking at this sort of figure on Pakistan's complexity of products, economic complexity, which plummeted in the early 1990s and hasn't recovered since. And I'm wondering if there are sort of key ideas in the new administration about how to deal with this. Is there sort of now a reversal of the earlier position of managing the dollar as excessively as was done in the past?
or are there other ideas within the very constrained environment that we find ourselves in that you can take? I also want to make two separate points. This is my main question, big ideas about development. One is that, as you mentioned earlier, the narrative in the country is terrible. The public opinion on what to do about the economy. And actually, आपने एक phrase इस्तेमाल किया, अवाम को relief देंगे. Right? There is too much of an emphasis on the idea that government is responsible for prices. And fuel subsidy is exactly that. Why do we broadly have an expectation कि आप हमें fuel सस्ता करके देंगे when the world prices are going up? So for a challenge for all of us here is to help shape the narrative better. But where we started this conversation from was this dispute between the outgoing foreign finance minister and the incoming finance minister, a potential finance minister or advisor, about the facts. And it struck me that this is because of a lack of transparency in data that is available publicly. It must be, because otherwise you could just say, "Wo document pada hua hai, wahan aap usko dekhein." And you could write a case saying, "Here is the position as reported by the government," and the outgoing guy could say, "No, here is my take given these other numbers." We're not having that conversation because these numbers are not being provided perhaps as transparently as they could be. So one hope is that perhaps there can be some move on making things more transparent. But if I can come back to my question about exports, economic complexity, what can we do beyond the tactical stuff? Thank you. Thank you, Ali. Thank you so much for very thoughtful questions. जो ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो आई थिंक ये जो बजट ऑपरेशंस के नंबर जो है आई थिंक क्वार्टरली या हाफ ईयरली डालती है, एंड दोज आर फाइनल नंबर्स, इसमें कोई मसला नहीं होता, बजट के बुक्स भी पूरी होती हैं, वो नंबर छुपे हुए नहीं होते। जो मुझे पर्चा दिया है वही शौकत साहब के पास पर्चा है, देयर इज नो डिसएग्रीमेंट बिटवीन के पहले 6 महीने के नंबर्स क्या हैं, तो दोनों के बराबर नंबर्स हैं। आई थिंक 9 महीने के भी शायद बराबर नंबर हैं। उनके पास भी जो पर्चा है उसमें भी एक जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस वक्त प्रोजेक्शन कर रही है, जो हम दूसरी मिनिस्ट्रियों से भी शेयर नहीं करते, फॉर इंस्टेंस वो उनके पास भी वही प्रोजेक्शन है, मेरे पास है। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरा ख्याल था मैं 4200 कर लूंगा, मतलब जस्ट मिनिस्ट्री का प्रोजेक्शन 5600 का था, लेकिन मैं 4200 कर लूंगा। अब एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास जादू का चार्ज था तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन वो ये बात थी। तो उसमें नंबर्स की ट्रांसपेरेंसी का इतना मसला नहीं था। और मैं एक और आपको बात बताऊं कि जितना हुकूमत पाकिस्तान डेटा प्रिंट करती है इतना शायद कोई भी नहीं करता हो, लेकिन इट्स नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली, इट्स नॉट वेरी एक्सेसिबल। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो और थोड़ा डिले भी होता है, लेकिन अगर आप पीबीएस की साइट पे चले जाएं, एंड एम ज़्यादा एज एन एक्सपर्ट ऑन दिस, पीबीएस की साइट पे बहुत सारा डेटा होता है, स्टेट बैंक की साइट पे बहुत सारा डेटा होता है, मुझे तो अब शीट नंबर्स भी याद हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट पे डेटा होता है, कॉमर्स की साइट पे बड़ा डेटा होता है, तो काफ़ी डेटा मिल जाता है, मतलब छुपी हुई चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन लोग इसको अक्सर देखते नहीं हैं। आपने एक और बात करी थी अली, दैट आई वांटेड टू रियली रिस्पॉन्ड टू, मैं जहन में निकल गया है। I'm sorry. IMF, I talked about Daronomics, I talked about the fuel subsidy. Complexity, perhaps. Ji? You talked about complexity. That's quite important. Is this the one? Complexity मुझे समझ में नहीं आती। मैंने एक किताब पढ़ी थी complexity और chaos के बारे में, मुझे समझ में नहीं आई। सब ना होना आंसर that. That although normally मुझे समझ में नहीं आती उन चीज़ों का मैं आंसर करता हूँ, लेकिन मैंने इस पर नहीं करता। देखिए, IMF से आपकी बात है कि IMF पैसे दे देगा whatever, और मतलब ये टेक्निकल है whatever, वो यही मसला है ना। देखिए, पाकिस्तान का मसला ये है कि we are too big to fail, I suppose, तो हमको कोई ना कोई बचा लेता है। हर कुछ अरसे बाद, 5-6 साल बाद, तो फाइनेंस मिनिस्टर चिल्लाता है कि भाई पानी सर से गुजर जाएगा, कुछ ना कुछ करके बचा लो। तो वजीर आजम आपका चीन भाग जाता है, आर्मी चीफ आपका कतर भाग जाता है, एक मिसाल है, कहीं और मुल्क चले जाता है, कोई किधर भागता है, और कहीं से 2 अरब रुपए, कहीं से 2-4 अरब डॉलर इधर उधर से लाग रहे हैं, और हम बोलते हैं चलो ठीक है अब 2-4 साल के लिए चलें। फिर थोड़ा सा चलना शुरू हो जाता है, फिर पीपल लाइक मिफ्ता इस्माइल स्टार्ट गिविंग अवे गुडीज, ऑल्सो नोन एज रिलीफ।
और फिर हम वापस उसी मैच पे आके खड़े हो जाते। लेकिन हम तो वो गरीब रिश्तेदार नहीं होते सबके पास जो कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन मतलब मामू से पैसे लेते रहते हैं। हम तो उस टाइप के हैं, पुप्पी से पैसे लेते हैं, हम तो उस टाइप के हो गए। तो कभी ना कभी हम अपने पैर पे खड़े होंगे। अभी वो कभी नहीं आया है, अल्लाह करे आ जाए, लेकिन अभी वो शायद कभी नहीं आया। लेकिन ये कि मतलब तो IMF थोड़े से पैसे दे देगा और टाइट कर देगा, हो सकता है ना दे इस बार, थोड़ा सा मतलब इस बार थोड़े से वो है, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे, बात करेंगे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। मैं मतलब आई विल नॉट लेट do not on my watch will I let Pakistani macroeconomic stability get worse. That for sure. जो भी करना होगा कुछ ना कुछ करेंगे. Okay, let's move on. If I can just sorry, go ahead, Ali. Go ahead. So the main question was कि तो tactical चीजें हो गई, अब जो हमने अपनी इंडस्ट्री को ठीक करना है, जो एक्सपोर्ट्स ठीक करने हैं, उसके ऊपर क्या आइडियाज हैं? अच्छा, उसके ऊपर मैं आपको आइडियाज दे देता हूँ, ठीक है? मैं you understand कि I am a finance minister presenting the 4th budget of this parliament, right? So and the last year left. लेकिन अगर मेरे पास 5 साल होते तो मैं तो ये कह चुका हूँ इंटरव्यूज में वगैरह कि ये पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा इससे दूर हटना पड़ेगा। एक किताब मुझे सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ अर्से पहले दी थी, आई थिंक खुर्रम में आल्सो लुक्ड एट इट, सो सवेल इज हियर, ही मे हैव लुक्ड एट इट आल्सो। आप में से और लोगों ने भी शायद देखी, हाउ एशिया वर्क्स। इट्स नॉट अ वेरी वेल रिटन बुक, आई मीन इट्स नॉट एन एकेडमिक बुक और वेरी रिगरस बुक। कोई ब्रिटिश जर्नलिस्ट है और बहुत ज्यादा जनरलाइजेशन करता है, लेकिन उसने 2-3 चीजें जो बताई हैं वो बड़ी मेरे ख्याल से काम की चीज। उसने एक चीज बताई कि 1960 की दिहाई के अंदर कोरिया में जनरल पार्क आया, उसने सारे बिजनेसमैनों को बुलाया, उसने कहा कि तुम्हारी सारी फैक्ट्री नेशनलाइज कर दूंगा अगर तुम एक्सपोर्ट नहीं करोगे, और इंपोर्ट की इजाजत बिल्कुल नहीं दी, सबको एक्सपोर्ट पर डाल दिया। जापान के अंदर वो मिनिस्ट्री ऑफ क्या था, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मिटी, उसने भी 50 की दिहाई में ये करवाया, और 80 और दिहाई के अंदर 90 के अंदर चीन ने भी ये किया। तो आप देखें कि 40 और 50 और 60 की दिहाई में जापान ने 10-10% ग्रोथ की 20 साल तक, 70-80 में कोरिया ने की है, 90 और इस साल की, इस सदी की पहली दिहाई में चीन ने की, और आपने 20-20 साल तक डबल डिजिट ग्रोथ करी। और आपने ये थोड़ा सा फ्री मार्केट के परसेप्शन से हटे हैं, और मैं इसलिए इस पर रेडी हो जाता हूँ क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे फ्री मार्केट नहीं है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट पे बेच रहे होते हैं ना, वो भी रिस्ट्रिक्टेड मार्केट है। व्हाट इज हैपेंड इज कि आपने मिफ्ता इस्माइल को, एक जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, कहा है कि यार या तो तुम ये टॉफियां बेच लो एक प्रोटेक्टेड पाकिस्तानी मार्केट पे जहाँ पे 30-40% ड्यूटियां होगी, और दुनिया में और कोई नहीं बेचेगा, तो जैसी टॉफी बनाएगा वो बिक जाएगी, और यहाँ पे तुम छोटी सी मार्केट में बेचो और इसमें बड़े अच्छे नफे। या फिर तुम जाके ब्राजीलियन मैन्युफैक्चरर्स और कोलंबियन मैन्युफैक्चरर्स और अर्जेंटीनियन मैन्युफैक्चरर्स और श्रीलंकन मैन्युफैक्चरर्स सबसे कम्पीट करके अमेरिका में बेचो। वो मार्केट बहुत बड़ी है, देन बट यू हैव टू बी रेडी एफिशिएंट। So every Pakistani businessman chooses to just sell to Pakistan, which is a very small, poor market, but because of high barriers, we sell it. आपने अगर तरक्की करनी है, so you have to switch this model and say कि नहीं, हम तुमको पाकिस्तान में नहीं बेचने देंगे, हमारे पास इतने डॉलर नहीं है कि हम तुमको पाकिस्तान में बेचने के लिए मशीनरियाँ इंपोर्ट करने दें। तुमको सिलाई मशीन लगाने, जीन सीनी है, बाहर बेचनी है, बिस्मिल्लाह करो, लेकिन तुमको यहाँ पर गाड़ी बना के बेचनी है जिसके अंदर आप 20% वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और 20% की ड्यूटी प्रोटेक्शन चाहिए ताकि आपको 100% प्रोटेक्शन हो जाए आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे, ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने 4 स्क्रू लगाने हैं मोबाइल फ़ोन पे और 2 बिलियन या 4 बिलियन डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करो और ₹1 का मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट नहीं करो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो कहीं ना कहीं हमको लाइन खींचनी पड़ेगी। हर मतलब इस पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा बिजनेस बैंकरप्ट नहीं होता है, हर आदमी फिर इधर आके दौड़ देता है कि यार हमको बचा लो। सो कहीं ना कहीं लाइन खींचनी होगी, और कभी ना कभी हमको कुछ बिजनेसेस को मना करना होगा कि नहीं भाई, एक्सपोर्ट करना है, पूरी दुनिया हाजिर है, इस लोकल मार्केट को नहीं बेचना है। और ये थोड़े से बैरियर्स कम करने होंगे हमें, ताकि बाहर से लोग आए और ये हमारी जो लोग सॉरी Ali's question then is how would you begin? What would the first steps towards this kind of a policy look like in the forthcoming, let's say, next 6 months, 8 months? Where do you begin? फिर आप कहाँ से पकड़ेंगे? ये तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो बड़ी रेडिकल सी थोड़ी सी चेंजेस हैं कि मतलब थोड़े से तो हम चेंजेस करेंगे, मतलब थोड़े से, मतलब आई थिंक वी विल सीरियसली ट्राई टू, एंड आई हैव टॉक्ड टू शहबाज शरीफ अबाउट दिस एंड ही इज ऑल फॉर इट, कि वी शुड रियली नाउ डिस्करेज
Pakistani manufacturers to manufacture only to sell to Pakistanis. And अभी तक हमने कभी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में डिस्करेज नहीं करी किसी चीज़। हम एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा इनकरेज किया है, कंपेयर टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अब हमको इस टाइप की चीज़ें डिस्करेज करनी होंगी। जब लोग आके आपको ये कहते हैं कि देखो यार मुझे ये फैक्ट्री लगाने दो, मैं $100 मिलियन का इंपोर्ट बचा लूंगा, तो मेरा जवाब उनको होगा कि तुम मुझे $100 मिलियन का इंपोर्ट ना बचा भाई, तू बड़ी फैक्ट्री लगा ले, तेरे को कोई मराद की जरूरत नहीं होगी, तू चाइना से कम्पीट कर। सो आई मीन ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बजट में हम थोड़ी बहुत ट्वीक्स करेंगे कि we will now make. Ali, very quickly, does that sound like a satisfying answer to you? I mean, do you feel somewhat reassured hearing that as an answer to the question you asked? Just very quickly, because we've got 4 other hands up, then we'll move on with the conversation. Yes, thank you for responding. Huh? I said yes, appreciate your response. Okay, okay. Let's move on to Maha Rehman. We've got some questions coming in via other channels as well from non-participants. One is asking about the future of SAS and BISP and social protection generally. But right now, let's move on to Maha Rehman, also teaches economics at LUMS. And Maha, please go ahead. Yeah, thank you so much. So मेरे 2-3 questions इसी से related हैं जो भी conversation शुरू हुई है कि जब आप export बढ़ाने की बात करते हैं तो immediately जो next steps के अंदर what are the industries that you are looking into, कि आपका जो investment इस वक्त land में जा रही है, जो real estate की तरफ money route हो रही है, how do you intend to route that money into the more productive sectors? That's the first thing. Second thing is आपने भी data की बात की, तो हम बहुत अच्छा data agriculture पे भी generate कर रहे हैं. Or that data tells us that 40% of the produce in the country is getting wasted. और जब आपके inflation के अंदर इस वक्त आपका 30% your food inflation bill has increased as compared to the same time last year. So what is this government's plan vis-a-vis agricultural supply chains? How do we reduce hoarding for the sake of hoarding? How do we reduce the wastage? And how do we ensure better management of the supply chains? That's my second thing. उसके बाद आपने energy की बात की. Energy के अंदर, yes, we need to ensure long-term contracts. आपने the nature of the contracts also matters, but then there's also some infrastructural and administrative measures that are being talked about. The terminals लगाने हैं. How do we take advantage of our positioning right now to ensure that we get cheaper and better quality fuel at better cost for our industries and our power generation? Then I just want to quote an example. हमने financial or procurement reforms पे काम किया था शिबाज शरीफ के साथ when he was in the government last time. And उसके अंदर there were 2 types of main wastes. जो आपने बात की कि आपकी government management का bill बहुत ज़्यादा है. So it's not the active waste in the system, it's the passive waste in the system. कि people are not efficiently making decisions, there's passivity. So what are the accompanying reforms that will induce efficiency in your to make sure that the civilian government works efficiently? And what do you intend to do about that? तो जो macro picture है उसको जब हम micro program कौन से micro program से tie करेंगे, because a lot of micro programs that can have large fiscal implications for your government. Thank you, Maha. Thank you for all the 4 questions. तीसरा was about the energy. Remember, remind me the first. Just एक word बता देंगे तो मुझे याद आ जाएगा first and second का. So which exports, then agriculture productivity, yes, energy, and then Okay. देखिए exports के अंदर मुझे नहीं पता किस चीज का export होगा. And nor do I really care to figure out कि किसका export होना चाहिए. मैं समझता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी की को सही वैल्यू हो, मैं समझता हूँ कि अगर हम बिजली गैस वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर सही रेट पे दे रहे हों, तो अगर धागे का एक्सपोर्ट होना होगा तो धागा लग जाएगा, अगर टॉफ़ी का एक्सपोर्ट होना होगा तो टॉफ़ी लग जाएगी, शैम्पू का एक्सपोर्ट होना होगा तो शैम्पू लग जाएगी. I will not try to second guess the market, let the market decide. But I need to give all these companies, all the basic necessities to compete with the rest of the world. दूसरी आपने जो बात करी है कि how do you get money out of real estate and into the more productive sectors, और ये बात है आपकी एकदम दुरुस्त है. देखें, the easiest thing is कि पाकिस्तान के अंदर जो intergenerational दो stores of value है पाकिस्तान में, land और सोना, right? सोना is very easily evade, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं कर सकते.
पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स भी नहीं है। अब जिसका बाप अमीर होता है उसका बेटा भी अमीर होता है, उसका पोता भी अमीर होता है। तो इन वन वे टू ट्रांसफर दिस वेल्थ इज थ्रू लैंड। तो थोड़ा सा लैंड के ऊपर टैक्स होना चाहिए, स्पेशली लैंड विच इज नॉट डेवलप्ड एंड नॉट इम्प्रूव। ये मेरा ज़हन तो उल्टा है कि rather than actually I would not put tax on houses but I would put tax on empty land। तो अगर ये आप कर लें तो पैसे भी अच्छे जमा हो जाते हैं और आपको थोड़ी इक्विटी भी आ जाती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विटी भी आ जाती है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी भी आ जाती है, एंड सो आई मीन इंटरजनरेशनल इक्विटी भी आ जाती है, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी भी आ जाती है। तो लैंड के ऊपर टैक्स कर लें और ये जो रियल एस्टेट की एमनेस्टी इससे बंद कर लेते हैं। इस 8-10 बिलियन डॉलर की अगर रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, तो एक्सपोर्ट तो एक पैसे का नहीं करती। सो ये चीज़ें देखने की हैं। उससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट की तरफ चला जाएगा, इंपोर्ट के अंदर वैसे ही आप रिस्ट्रिक्शंस डालें। सो एंड आई थिंक हुकूमत को लेकिन अपने काम करने चाहिए कि गैस बिजली जो है इसको प्रोवाइड कर दें, लैंड सस्ता प्रोवाइड कर दें, या लैंड को लीज कर दें तो 20 साल में 50 साल में वापस रिवर्ट हो जाता है। तो एक आध जनरेशन या 2 जनरेशन अमीर होती हैं उस लैंड से, लेकिन फिर वो लैंड वापस आ जाना चाहिए। तीसरी आपने बात करी एग्रीकल्चर की। मेरी इधर आदिल साहब थे थोड़ी देर पहले। आई डोंट नो वेदर ही इज आदिल है इधर? जी I'm still here। ये मुझे थोड़ी सी हाँ, ये मुझे मदद करते रहते हैं, थोड़ी सी मुझे बताते रहते हैं अबाउट एग्रीकल्चर आउटपुट एंड स्टफ। मैं समझता हूँ, हालांकि मेरा कोई फार्म से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि द लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट इन पाकिस्तान इज फार्मिंग। We call ourselves an agrarian society or agriculture society or agriculture economy, and yet we import $8 billion worth of stuff। $4 billion का तो हम खाने पीने का तेल मंगवाते हैं पूरा पाकिस्तान के अंदर। We can grow canola, we don't, stuff like that। Our production, and I've shown this to Shehbaz Sharif also while we were in opposition, our production per hectare of cotton is less than India and the world average, and especially also much lower than the best countries in the world। Same is the case with I think wheat, rice, cane। क्या शायद cane में नहीं है, मेज में नहीं है, इंडिया से अच्छे हैं लेकिन वर्ल्ड एवरेज से उसमें भी कम है। सो मतलब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। हुकूमतों को, खासतौर पर सूबे की हुकूमतों को थोड़े से पैसे खर्च करने चाहिए। अब मतलब सीरियसली, मतलब ये अगर जितने मराते हम हमारे बिजनेसमैनों को देते हैं और जितने हम उनको टैक्स ब्रेक्स देते हैं और दीगर चीज देते हैं, तो उसके 1/4 पैसे लगा दें, 100-200 अरब रुपए लगा दें अगर एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट 4-5 साल में, तो रियली यू कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सीरियस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज आ सकती है। एंड दैट्स समथिंग वी शुड डू। एंड एक मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और आपने बिजली सही दी हुई होगी रेट पे, तो ऑटोमेटिकली डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएगी, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएगी। अब इतनी पाकिस्तान में बिजली है कि हुकूमत पे कहती है कि हमसे बिजली बिकती नहीं है। आप कह रही हैं 50% फ्रूट ज़ाया हो जाता है। वाई, मतलब वाई आरंट पीपल ओपनिंग कोल्ड स्टोरेजेस फॉर इंस्टेंस। सो ये जब मार्केट के अंदर जब लंपीनेस आती है, या जस्ट टू शो ऑफ, मुझे भी अभी तक इकोनॉमिक्स अपनी याद है कि जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर्स में नॉन कन्वेक्सिटीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर हुकूमत को कुछ करना चाहिए ताकि इसको हम उधर तक लेके जाएं। तो कोई ना कोई हर निकल सकता है, इसका इतनी मुश्किल नहीं है। और अब मतलब मुझे seriously, I mean those things we should pay attention to and we haven't paid attention to। Yeah, I just have a quick comment on the land tax. Land tax बहुत politically difficult चीज है। Like everyone commits to agreeing and saying कि अच्छा नहीं हम करेंगे, लेकिन फिर जब इस तरह की चीज आप करने पे आते हैं तो no government has actually taken that leap of faith। A lot of these things people won't disagree upon, लेकिन जब आप करने पे आएंगे तो then that requires that requires it to go through, that requires significant political mileage for it to go through। So will your government go ahead with the land tax? देखिए करना चाहिए। ये देखें, अब एक वजीर आज़म पाकिस्तान होता है ना, उसकी तनख्वाह बहुत कम होती है लेकिन उसको बड़ी इज्जत देती है। ठीक है, आपके पास अपने जहाज होते हैं, आपके पास अपने हेलीकॉप्टर होते हैं, दुनिया आके आपको सल्यूट कर रही होती है, सब कुछ कर रहे होते हैं। And all of this is done for you because they want you to make good decisions for this country। आप सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 12, 15, 16,
सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस ग्रुप में एक भी आदमी होगा या एक भी खातून होगी जो ये कहेगी कि यार टैक्स, लैंड पे टैक्स नहीं लगना चाहिए या खासतौर पर खाली लैंड पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। छोटे मतलब आई एम नॉट सेइंग गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगाओ, छोटे फार्मर्स को एग्जाम करो वगैरह वगैरह, बट हम नहीं लगाते। ठीक है, मैं समझता हूँ इस बात को कि ये पॉलिटिकली डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन अब इस मैच में तो पाकिस्तान पहुंच गया है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू बी टू नेगेटिव यू नो, बट जब मैं पिछले दौर में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, अब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वज़ीर था, तो एक प्रेजेंटेशन में दे रहा था, सो आई वाज टेलिंग मियां साहब के एक वक्त था जब पाकिस्तानी जो वज़राए ख़जाना होते थे या इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स होते थे वगैरह, या पाकिस्तानी वज़रा जो थे वो अपने आप को मलेशिया से और थाईलैंड से कंपेयर करते थे। फिर आया कि हम हिंदुस्तान से कंपेयर करते थे, फिर आया कि हम बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं। तो मैं कहा मियाँ साहब ये वक्त दूर नहीं है जो अगला वजीर जो होगा पाकिस्तान को, वो अफगानिस्तान से कंपेयर कर रहा होगा कि अफगानिस्तान में इतने का हो गया, इतने का हो गया। तो हम तो एक डाउनवर्ड प्रोजेक्टरी पे है ना, मतलब कम से कम इस तरह सोचें कि अगर हम स्टैग्नेंट है तो पूरी दुनिया आगे निकल रही है, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर एक आध मुश्किल फैसला ले लें तो ले ले, ठीक है, अल्लाह बड़ा है। मुझे मतलब इस बार आई एम कंसर्न, निकाल दें तो निकाल दें, कराची चले जाऊंगा, अल्लाह की मेहरबानी, उधर जाके रह जाऊंगा। खुर्रम कभी कभी मिलता रहा। Mr. Baha, if you had any follow-ups, now is a good time. Or we can 1:15 हो गई हैं, 1:15 हो गई हैं. बस Mr. I think Adil hasn't had a chance to speak to you yet. ठीक है, आदिल का अकेले सवाल और दो और सवाल अभी आए हुए हैं, उनको आप बीच में कहीं पे डाल दें कि आपके जो आइडियाज हैं, आपकी पार्टी में कितनी ओनरशिप है उन आइडियाज की, और नंबर 2 डार साहब का क्या रोल होगा आपकी वजारत में। किसका क्या पूछा आपने? डार साहब का क्या रोल होगा आपकी वजारत में, अच्छा, और आपकी पार्टी में कितनी ओनरशिप है आपके आइडियाज की। और इसी के साथ साथ मैं इनवाइट करता हूं अभी आदिल मंसूर को भी, who had his hand up. आदिल? Oh, hello. So Mr. भाई थैंक यू सो मच, बट देखिए आपने तो क्लियर कर दिया कि जितने एमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स हैं और एनालिस्ट हैं यहाँ पे जो सजेशन दी दैट वी हैव ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस with you on most of those economic issues, but what is the extent of consensus within PMLN? And number 2, do you believe the coalition government right now has the electoral mandate to carry out any substantive reforms, चाहे वो energy की हो, चाहे वो agriculture की हो? The coalition government is composed of जो parties हैं, People's Party, Muslim League, MQM, primarily theme, और BAP and एक जमहूरी वतन पार्टी आई थी, and JUI, ANP. Between them, they got 72% of the votes in the last election. They said, आज मैंने कहीं पढ़ा है, 72 नहीं होगा तो 70 होगा या 65% होगा. So मतलब इस तरह से in the sense like a broad basically popular तो है. And Shehbaz Sharif has become the prime minister. 175 members of the National Assembly support him. So I don't think he should shy away, and he is not the type who will shy away from making decisions. The only thing is that they don't want to stay in this government for very long and they want to go for elections. So वो देखते हैं क्या होता है. जो मेरी पार्टी में buy in है, तो at the top level, you know, like leaders Shehbaz Sharif, Shahid Abbasi, Khaja Asif, Ahsan Iqbal, all of these guys, I mean, they largely agree with what I'm saying, I think. ये अगर आप फ्यूल सब्सिडीज कम करते हैं तो MNS हमारे पूछो तो वो they will not be particularly happy. मैं जितने भी हमारे सोशल मीडिया के बच्चे हैं वो मुझे जब भी मुझे देखते हैं तो मुझे बोलते हैं मिफ्ता भाई वो PTA वाला टैक्स कम कर दीजिएगा, ये फोन के ऊपर टैक्स होता है. मेरे दोस्त के बच्चे और बच्चियां जो हैं वो भी मुझे मैसेज कर रही हैं कि अंकल वो टैक्स कम कर दीजिएगा. तो you know, but I think there is a broad-based consensus amongst the leaders of our party that some good important decisions need to be taken, and inshallah we will do that. I have no doubt about that. Okay, I think
with that, we should give it a rest. It is getting late. It is Ramzan, and it is a working night. We all have a busy day ahead. So special thanks to Miftah for agreeing to this. Special thanks to all the participants for being here, sharing your expertise, and driving a very good conversation. I can confirm to all of you that 200 loyal viewers have stayed with us online throughout this conversation. And many more are going to benefit from it because it will be up on our Facebook page and on YouTube. I want to encourage all of you to please subscribe to Profit Magazine. Keep an eye on this space because it's where the highest quality business and economic conversations in the country will be taking place. Thanks very much, everyone. I think we can wrap this up now.